Question number 4 of this paper is diagram is given. In the question diagram shows a block of mass 10 kg suspended below a horizontal ceiling by two strings AC, this is AC, and BC of length 0.8 meter and zero point 0.6 meter respectively attached to a fixed points on the ceiling. ये A और B fixed points हैं. Angle ACB is 90 degree. There is, as a whole, ABC is a right angle triangle. There is a horizontal force of magnitude F Newton acting on the block. The block is in equilibrium. तो ये block equilibrium में है. In the case where F is equal to 20, find the tensions in each of the strings. तो हमने टेंशन्स फाइंड करनी है. T1 एंड T2 वो दोनों डिफरेंट होंगी. वो हम टेंशन फाइंड करने के लिए पहले इनको हम पॉसिबल फोर्सेस एंड द कंपोनेंट्स यहाँ पे डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे. तो फ्रॉम ट्राइंगल फर्स्ट वी नीड दीज एंगल्स एज वेल. ये एंगल्स हम देखते हैं पहले ये यूज होने हैं क्योंकि कंपोनेंट्स में ये एंगल्स यूज होते हैं. तो फर्स्ट वी विल फाइंड दीज एंगल्स. फ्रॉम ट्राइंगल ABC tan theta is equal to 0.8. If we are taking this angle as theta, then perpendicular 0.8, where base is 0.6, so we will use a trigonometric ratio. Tan theta is equal to perpendicular over base. तो यहाँ से theta is equal to tan inverse 4/3. We get theta is equal to 53.13 degree. This shows that this angle is 53.13. तो ये एंगल फिर ऑटोमेटिकली 90 प्लस 53 प्लस 53.1. तो ये तीसरा थर्ड एंगल मस्ट बी 180 में से दोनों एंगल माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 36.87 डिग्री आ जाता है. Suppose tension in the string in the BC side is T1 and on the side AC this is suppose this is T2. Now we will resolve T1 and T2 horizontal and vertical components. In part A, the tension, the force F is 20 Newton. This is F is equal to 20 Newton. Find the tensions in each of the strings. We have to find T1 and T2. Resolving. इसको T1 को रिजॉल्व करेंगे आपके पास एक ये कंपोनेंट आएगा. Other component is this. And this angle is also 53.13 vertical opposite angles.
अल्टरनेट एंगल्स। तो ये कंपोनेंट आएगा T1 साइन 53.13 डिग्री। This component is T1 cos 53.13 degree. In the same way we will solve T2, और यहाँ पे इसको रिजॉल्व करने के लिए ये कंपोनेंट है T2 का, और दूसरा ये कंपोनेंट होगा। तो ये एंगल जो है, जो अल्टरनेट एंगल, ये 36.87 डिग्री होगा। तो ये कंपोनेंट होगा T2 sin 36.87. This component is T2 cos 36.87 degree. Now the weight of the block is vertically downward 10 G. Okay. Now the system is in equilibrium. So sum of horizontal equilibrium condition होती है, sum of horizontal forces 0 and sum of vertical forces 0. Horizontal forces 0 mean horizontal force देखें, ये 20 भी horizontal है, T1 cos 53.13 डिग्री horizontal है, और opposite डायरेक्शन में T2 cos 36.87 डिग्री horizontal है। तो इक्विलिब्रियम में तो हम सम इज इक्वल टू 0, तो 20 प्लस T1 20 प्लस T1 cos 53.13 minus T2 cos 36.87 degree is equal to 0. So from here, putting the values of cos 53.13 degree or cos 36.87 degree, तो we can get, इसको यूं भी लिख सकते हैं हम, 20 प्लस cos 53.13 डिग्री की वैल्यू 0.6 है, तो 0.6 T1, तो माइनस वाली टर्म को राइट पे ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी T2, और ये उसके साथ है 0.8 cos 36.87 डिग्री की वैल्यू ये है। तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, तो 0.8 T2 माइनस 0.6 T1 is equal to 20. This is equation number 1. Say this is equation number 1. In the same way, वर्टिकल फोर्सेस का सम भी 0 होगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा। देखें आप वर्टिकल फोर्सेस T1 साइन 53.13 डिग्री प्लस T2 साइन 36.87 डिग्री माइनस 10G इज इक्वल टू 0। तो 10G जो है वो 100 होता है, इसको राइट पे ले जाते हैं, तो इनकी साइन और कॉस के साथ एंगल की इनकी वैल्यूज करेंगे हम फाइंड। तो ये साइन 53.13 साइन जो है वो 0.8 आ जाता है 0.8T1 प्लस 0.6T2 माइनस 10G को राइट पे ले जाएं, वो 100 आ जाएगा। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Now we will solve these two equations simultaneously. तो substitution method use करते हैं। from equation number 1,
0.8 T2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 0.6 T1। यहाँ से T2 फाइंड कर लेंगे। T2 आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 0.6 T1 ओवर 0.8. In this say this is equation number 3. Putting the value of equation number 3 in equation number 2. From equation number 2, 0.8 T1 प्लस 0.6 T2 की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। T2 की वैल्यू 20 प्लस 0.6 T1 और 0.8 is equal to 100. This becomes further simplification 0.8 T1 प्लस 0.6 ओवर 0.8 को लेते हैं हम 0.75 आ जाता है तो 20 प्लस 0.6 T1 इज इक्वल टू 100। अब 0.75 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.8 T1 प्लस 15.75 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 0.45 T1 is equal to 100. Collecting the terms involving T1 we get T1 वाली terms को हम ऐड कर लेते हैं 1.25 T1 is equal to 85 100 minus 15 85 from here T1 is equal to 85 or 1.25 that becomes 68 Newton. This is T1. Now putting this value of T1 in equation number 3. From equation number 3, T2 will be 20 plus 0.6 into 68 T1 की वैल्यू ओवर 0.8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास T2 जो है वो 76 न्यूटन आ जाता है। Now next part B of this question is find the greatest value of F. Find the greatest value of F for which the block remains in equilibrium in position shown. ये देख रहे हैं आप ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ जो है ये हमने फाइंड करनी है फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एफ जो है वो इस साइड पे लगेगी राइट साइड पे। जो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट फॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ जब हम मैक्सिमम फोर्स जो है वो एफ को मैक्सिमम लिमिट पे लेके आएंगे तो ये जो बीसी साइड पे स्ट्रिंग है उसकी टेंशन जो है वो 0 हो जाएगी। T1 जो है इन दिस केस वो 0 हो जाएगी क्योंकि वो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेंगे ग्रेटेस्ट एफ उससे ये टेंशन इन स्ट्रिंग ऑन द साइड BC विल बी 0। तो दूसरी साइड पे जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन रहेगी। तो सो फॉर दिस केस अब हमने ये इस एफ को फाइंड करना है greatest value of f. So from the figure for greatest value of f T1 tension in the string on the BC side T1 that will be 0.
क्योंकि उसी साइड पे फोर्स लग रही है, तो दैट becomes zero because not remains dot. ओके, सो अब हम T2 जो है वो फाइंड कर लेते हैं। T2 वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं T2 के, उनको हम ऐड करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ T2 टेंशन, वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, एक तो वेट है, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन T2 है। तो सो T2 एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ F। तो वहाँ पे ये T2 जो है टेंशन वो हमें यूज़ करना है, तो हम T2 फाइंड करते हैं साइन T2 साइन वर्टिकल फोर्सेस का सम -10G इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। T2 sin 36.87 degree is equal to 100, 10G is 100. From here T2 is will be equal to 100 over sin 36.87 degree. So T2 will be 166.67 Newton. No, no force. We have to find F horizontal greatest force, greatest value of F. F minus horizontal component T2 cos 36.87 degree is equal to zero. F minus T2 cos 36.87 degree is equal to zero. Horizontal forces जो है, वर्टिकल फोर्सेस को सम से हम T2 फाइंड कर लिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स को बिकॉज F इज हॉरिजॉन्टल, इनका सम जो होगा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम जीरो बिकॉज द system is block remains in equilibrium. From here F is equal to T2 cos 36.87 degree. Putting the value of T2, T2 is 166.67 into cos 36.87 degree is 0.8. तो फाइनली F हमारे पास जो वो 133 न्यूटन आ जाएगा। दिस इज आंसर, दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ F. Now next question is, a cyclist is riding down along a straight horizontal road. The total mass of the cyclist and the bicycle is 70 kg. M is 70 kg. At the instant when the cyclist's speed is 4 meters per second, her acceleration is 0.3. Speed is 4 meters per second and acceleration is 0.3 meter per second square. So straight horizontal road like this. There is a constant resistance to the motion of magnitude 30 Newton. Resistor force of friction is 30 Newton. Direction of movement is this. Driving force will be, find the power developed by the cyclist. तो ड्राइविंग फोर्स जो होती है वो हमारे पास यूजिंग दिस फार्मूला, पावर का फार्मूला F इंटू वी, तो यहाँ से F को सब्जेक्ट बना लेंगे, वो P ओवर V आ जाएगा। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स P ओवर V. So net force will be, we use here the
Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. F is equal to ma to P over V minus force of friction, that is 30 is equal to ma. Ma is given. V is also given. We can find power. Speed is 4 minus 30. M is 70. 0.3 is the acceleration. So from here P is equal to 204 watts. The next part of this, for the next part of this question, the cyclist comes to the top of the hill. Cyclist comes to the top of a hill inclined at 5 degree to the horizontal. The cyclist stops pedaling and free wheels down the hill. टॉप से डाउनवर्ड आ रहा है free wheels. So the cyclist is no longer supplying any power. Free wheels means वो force नहीं लगा रहा है. The magnitude of the resistance force remains at 30 Newton. Resistive force 30 Newton है over a distance of d. The speed of the cyclist increases from 6 meter per second to 12 meter per second. Find the change in kinetic energy. This part is simple. Kinetic energy की change जो होगी final kinetic energy minus initial kinetic energy 1 over 2 mv square minus 1 over 2 mu square. तो 1 over 2 m is common. M हमारे पास given है 70. V square minus u square. V square is 12 square minus 6 square. So we get 35. 144 minus 36. We get 3780 joules. This is the change in kinetic energy. Now use energy method to find D. अब हम एनर्जी मेथड से वो डी अलोंग द प्लेन जो डिस्टेंस है वो से फाइंड करेंगे. तो इसके लिए हम स्केच बनाते हैं. This is a sketch for this. This is a horizontal. The cyclist comes to the top of the hill. यहाँ पे टॉप पे आता है. अब डाउनवर्ड मूव करेगा. This is a cyclist. This angle is 5 degree. अब वो movement is downward. So friction is given, that is 30 Newton. This distance is d, जो कि हमने फाइंड करना है. Distance along the plane is d meter. तो speed here at the top is 6 meter per second. Speed at this bottom is 12 meter per second. The height, perpendicular distance, the height between the two particles is this. This is height. दोनों पोजीशन साइक्लिस्ट की दोनों पोजीशंस के दरमियान जो हाइट है वो ईच है हमारे पास. अब हमने एनर्जी मेथड यूज करना है. एनर्जी मेथड के लिए हमें ये फार्मूला यूज करना है. वर्क is very important formula. This is also called the work energy relation. Work, I will write it in short form. Work
WD, work done by driving force, is equal to work against friction, WF, work against friction plus change, delta, shows a change in mechanical energy. ओके, यहाँ पे वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स जो है वो जीरो होगा क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स is using to bring the cyclist downward. तो वर्क नो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, सो यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे इज इक्वल वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन एफ इंटू डी को 30 एफ एंड डी हमने फाइंड करना है अलॉन्ग द प्लेन प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करेंगे एट द टॉप एंड एट द बॉटम। टॉप पे मैकेनिकल एनर्जी होती है सम ऑफ पीई प्लस के। तो पीई हमारे पास आएगा एम जी एच, एम जी एच, एच अभी हम फाइंड करेंगे, एच होगा परपेंडिकुलर दिस एंगल इज आल्सो 5 डिग्री। तो एच हमारे पास होगा एच ओवर डी इज इक्वल टू साइन 5 डिग्री फ्रॉम हेयर हमारे पास एच आ जाएगा डी साइन 5 डिग्री। तो यहाँ पे 70 इंटू एच 10 इंटू डी साइन 7 डिग्री लिख लेंगे, डी साइन 5 डिग्री प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 एम वी स्क्वायर। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70 को 10 से और साइन 5 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आ जाएगा, दिस बिकम्स 61 डिग्री प्लस 1/2 इंटू 70 इंटू 6 दैट बिकम्स 1260। ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी है टॉप आई है। मैकेनिकल एनर्जी एट द बॉटम फाइंड करेंगे, वो भी पीई प्लस के ही होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बॉटम पे जीरो क्योंकि नो हाइट, तो काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी 1/2 एम इज 70, वी इज 12 स्क्वायर, वी गेट 5040 जाउल। यहाँ पे हमने चेंज लिखनी है, चेंज होती है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज 50, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी 5040 minus initial is this 61D प्लस 1260। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30D प्लस 5040 माइनस 61D माइनस 1260। तो सिंप्लीफाइंग वी विल गेट 0 is equal to minus 31D plus 3780 from here 31D is equal to 3780 and D is 3780 divided by 31 we get 122 meter. Question number 6. Two particles P and Q of masses 0.3 kg and 0.2 kg respectively are attached to the ends of light in extensible string. The string passes over a fixed smooth pulley at B. B point पे जो पुली है स्मूथ पुली
which is attached to inclined plane. P lies on a smooth plane AB. Plane AB is smooth. This means there is no friction in plane AB, which is inclined at 60 degree to the horizontal. Q lies on a plane BC. Q point जो है plane BC पे lie करता है, which is inclined at 30 degree to the horizontal. The string is taut and the particles can move on lines of greater slope of two planes. डायग्राम में क्लियर है सब कुछ. Part A is, it is given that plane BC is smooth. Plane BC is smooth. This plane is BC plane जो है ये smooth है. तो हमने and the particles are released from rest. Particles को release किया जाता है from rest. Find the tension in the string and the magnitude of the acceleration. हमने tension और acceleration find करना है particles में. So there will be two equations of motion using Newton second law of motion. First, we will resolve the forces acting on particle Q, the weight vertically downward. Mass of this particle is 0.2, so 0.2 g. This component along perpendicular to the plane, ये along the plane, ये angle वही होगा 30 degree. ये component होगा 0.2 g sin 30 degree. तो weight का component और tension की direction on this side, BC plane पे tension की direction towards pulley. On the other side, दूसरी plane पे AB plane पे भी जो tension की direction towards pulley होगी. और यहाँ पे इसका वेट जो है P पार्टिकल का mass जो है 0.3 kg, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा 0.3 g. और we will resolve, find two components along and perpendicular to the plane. This angle is 60 degree. So this component is 0.3 g sin 60, 0. दूसरा कंपोनेंट फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है. तो because only the force that acting on the particles to bring downward is weight component which acts along the plane. 0.2 g sin 30, 0.3 g sin 60. Okay. Now for particle Q, equation of motion will be, for particle Q, equation of motion will be uh, T tension direction downward plus 0.2 g sin 30 downward is equal to MA. MA is 0.2 A. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 0.2 g sin 30 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं, हमें 1 मिलेगी. g 10 होता है, sin 30 1/2, तो ये कैलकुलेटेड है 1 आएगा, इज इक्वल टू 0.2 A. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फॉर पार्टिकल P, equation of motion using Newton's second law of motion. 0.3 g sin 60 degree minus t is equal to MA. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2.598. 0.3 g sin 60 डिग्री की वैल्यू 2.598 आ जाएगी,
minus t is equal to ma. So say this is equation number 2. Now solving these two equations 1 and 2, 1 and 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है, इनको यूं लिख लेते हैं 2.598 minus t is equal to ma. इक्वेशन नंबर 1 is 1 plus t is equal to ma. ऐड कर देंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, माइनस टी और प्लस टी वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास 3.598 is equal to 0.58. From here A is equal to 7.20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किया जाता है। So putting the value of A in equation number 1, equation 1 t is equal to 0.2a minus 1, t will be 0.2 into a is 7.20 minus 1. तो ये हमारे पास आ जाएगा t is equal to 0.439 Newton. This is the answer. Now part B of this question is, part B, it is given instead that the plane BC is rough. Now the plane BC is rough. Plane BC is rough. A force of magnitude 3 Newton is applied to Q directly up the plane along a line of greater slope of the plane. तो इसके लिए डायग्राम हम दोबारा बनाते हैं। तो ये डायग्राम देखें, डायग्राम इसकी पार्ट की डायग्राम जो है हम यहाँ बनाते हैं। This is diagram. This is pulley. Or this is the second plane. This is the second plane. Horizontal. यहाँ से ये पार्टिकल this BC plane. और this is A. This angle is 60 degree, and this is a string particle. This is a string. This is another particle P, and this is Q. This particle is P, this is Q. This is point B. पुली पर जो पॉइंट है वो B है, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री
टेंशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स पुली, टेंशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स पुली 0.3 kg and 0.2 kg. A force of magnitude 3 Newton is applied to Q particle पे एक force applied हो रही है 3 Newton is applied to Q directly up the plane. This is 3 Newton force on Q. So, now in this case the plane BC is rough. ये plane BC जो है in this uh, case it is a rough plane. इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन होगी. तो फ्रिक्शन के लिए हम नॉर्मल फोर्स भी लेंगे. तो हम पहले इनको पॉसिबल फोर्सेस को मेंशन करेंगे. पॉसिबल फोर्सेस को यहाँ पे मेंशन करेंगे. तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ऑफ क्यू 0.2 g, this component and this component, the angle will be, this angle is 30 degree. तो 0.2 g sin 30 degree, 0.2 g cos 30 degree, the normal reaction perpendicular to the plane. No, and tension, direction of tension towards the pulley. अब हमने डिसाइड करना है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ पे किधर होगी. फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन Q एंड द प्लेन BC फॉर विच द पार्टिकल्स रिमेन एट रेस्ट. तो म्यू होता है हमारे पास, दिस इज द फार्मूला, F इज इक्वल टू म्यू आर, और म्यू होगा हमारे पास F ओवर आर. तो हमने फाइंड करना है लीस्ट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. लिखा हुआ है लीस्ट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. और नाउ इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस फार्मूला, म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर आर. एफ ओवर आर इज अ फ्रैक्शन. तो सो फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू we have smallest value of f. लेकिन f जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में r है. म्यू की ओवरऑल म्यू की वैल्यू एट लीस्ट कब आएगी, सॉरी लीस्ट कब आएगी, जब न्यूमरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर हो. तो सो मिनिमम वैल्यू हमें फ्रिक्शन की चाहिए. तो सो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होगी वो अपवर्ड होगी. इसकी मूवमेंट में फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी. तो उसकी मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड है. पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड है. फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है टेंडेंसी टू मूवमेंट. पार्टिकल्स रिमेन्स एट रेस्ट, पार्टिकल्स रिमेन्स एट रेस्ट. तो इसके लिए म्यू क्या होगा, it is given instead BC plane graph, a force of magnitude 3 Newton is applied to Q directly up the plane, along a line of greater slope of plane. तो यहाँ हमने फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में टेंडेंसी टू मूवमेंट जो है वो इसकी अपवर्ड है, डाउनवर्ड वेट का कंपोनेंट है.
तो सो हमारे पास एफ जो है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो लीस्ट आता है। इक्विलिब्रियम फॉर पी, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, when p equilibrium for p for p, यहाँ से हम हमारे पास टेंशन जो है वो आ जाएगी। इसको हम रिजॉल्व करते हैं पहले। ये देखें, वेट, वेट का कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट ऑफ वेट, ये एंगल इज 60, दिस इज 0.3 जी साइन 60 डिग्री, 0.3 जी cos 60 डिग्री। तो इक्विलिब्रियम फॉर पी ये आपके पास आ जाएगा, टेंशन यहाँ से आ जाएगी 0.3 जी वेट का कंपोनेंट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से टी हमारे पास आ जाएगा 2.598 न्यूटन। So for least value of mu, the value of f will be least. So q is on the point of moving down. लीस्ट वैल्यू के लिए पॉइंट ऑफ मूविंग टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड होगी, टेंडेंसी टू मूवमेंट डाउनवर्ड होगी, तो एफ जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो लीस्ट होगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है लीस्ट होगी, तो अल्टीमेटली म्यू विल बी लीस्ट। तो सो फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ mu, the value of F force of friction will be least. So Q is on the point of moving down. So Q particle uh, is on the point of moving down. So equation of motion for particle Q जो होगी वो होगी 3 plus F minus T minus 0.2 G sine 30 degree is equal to 0. From here F will be T plus 0.2 G sine 30 minus 3। तो F हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 2.598। वो ये देखें, देख रहे हैं आप, टी 2.598 प्लस 1.2 जी साइन 30 वैल्यू 1 थी माइनस 3, तो सो हमारे पास एफ आ जाएगा 0.598। Actually we have to find this is f, और r जो है वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, r जो है इन द प्लेन बी सी, प्लेन राफ है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से r जो है वेट के कंपोनेंट के इक्वल होगा, r विल बी 0.2 g cos 30 degree. So putting the value of g and cos 30, we get r is equal to 1.732 न्यूटन। तो अब हम म्यू फाइंड करने जा रहे हैं। म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर आर। तो एफ हमारे पास है 0.598 एंड आर इज 1.732. We get the value of mu, that is least 0.345.
So next question for 7 is question number 7. A particle P moves in a straight line through O, the velocity v meter of P at time t second of the passing O is given by the velocity time relation है, where B and C are positive constant. At t is equal to 5, the velocity of P is 0 and its acceleration is minus 13 over 12 meter per second square, so that B is equal to 9 and find the value of C. Velocity time relation is given, so velocity 0 at t is equal to 5, ये पॉइंट O है. Particle P moves in a straight line through a point O. ये इस तरह की मूवमेंट है. Movement of the particle on this side. V is 0 when t is equal to 5. Okay, velocity v is equal to 0 when t is equal to 5. Velocity time relation is this. V is equal to 9 over 4 plus b. उसको हम यूँ लिख लेते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं बी ओवर टी प्लस 1 स्क्वेयर माइनस सी टी स्क्वेयर. तो नो वेलोसिटी जो है वो स्पीड जो है वो हमारे पास 0 है. वेलोसिटी ऑफ पी इज 0 and the value of t is 5. So putting v is equal to 0, t is equal to 5. 9 over 4 plus b over t plus 1, 5 plus 1, 6 square 36 आ जाएगा minus ct square. Ct is 5, 5 square is 25. So we get an equation in B and C. B, uh, this becomes B over 36, B over 36 minus 25, C is equal to minus 9 over 4. From here, इसको हम यूँ रख सकते हैं 25C minus B over 36 is equal to 9 over 4. Say this is equation number 1 and acceleration is minus 13 over 2. एक और इक्वेशन यहाँ से बन सकती है. हम we will differentiate its speed हमारे पास given है v is equal to उसको यूँ रख लें 9 over 4 प्लस b इंटू टी प्लस 1 वो पावर उसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं. ये आ जाएगा -2 माइनस सी टी स्क्वेयर. अब एक्सेलेरेशन जो है वो फाइंड करेंगे. डी वी ओवर डी टी एक्सेलेरेशन होता है. तो ये आ जाएगा 9 ओवर 4 का 0 0 माइनस 2 बी टी प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 सी टी. तो एक्सेलेरेशन इज माइनस 13/12 इज इक्वल टू -2 b t is 5 plus 1 6 6 minus 3 minus 2 c and t is uh, 5. Now it becomes after simplifying minus 13/12 is equal to minus b over 108. ये देखिए इसको सिंप्लीफाई करना 6 की पावर -3 वो 1 over 6 की पावर 3 आ जाएगा. दैट इज 108 minus 10c
तो हम नेगेटिव साइन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस से साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 13/12 इज इक्वल टू B/108 प्लस 10C। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 से solving 1 and 2, solving equation number 1 and 2 uh, from 1, from equation number 1 we can make subject B। तो इक्वेशन नंबर 1 से आप B को सब्जेक्ट बना सकते हैं। B सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। B की वैल्यू फाइंड करने के लिए B/36 इज इक्वल टू 25C माइनस 9/4। यहाँ से B आ जाएगा आपके पास 36, 25C minus 9/4, we get B is equal to 900C minus 81. Say this is equation number 3. Equation number 2 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू B की पुट करेंगे, वो बन जाएगा 13/12 is equal to B plus 1080C over एल्सियम लेके को सिंगल फ्रैक्शन बनाया 108। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस बिकम्स 117 is equal to B plus 1080C। तो putting the value of B 117 is equal to 900 C minus 81 प्लस 1080C। तो C और टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1980C इज इक्वल टू 198 फ्रॉम हेयर C इज इक्वल टू 0.1। यहाँ से C हमारे पास ये आ जाता है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ C, तो B हमारे पास आ जाएगा 900 इंटू 0.1 minus 81, we get the value of B is equal to 9. Now part B of this question is, given that the velocity of P is 0 only at t is equal to 5, find the distance traveled in the first 10 seconds of its motion। फर्स्ट 10 सेकंड ऑफ इट्स मोशन में ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास पहले हम 0 से 5 तक डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देन 5 to 10, बिकॉज 5 पे उसकी स्पीड जो है वो 0 हो जाती है। t is equal to 5 पे स्पीड इज velocity is 0, देन नेक्स्ट 5 to 10 सेकंड के लिए हम अलग से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 0 to 5 and then 5 to 10। So V is equal to, V is given 9/4 plus B t plus 1 minus 2 minus ct square। So putting the value of B and C we get B is equal to 9/4, B की वैल्यू 9 हमने फाइंड की है अभी। t plus 1 power -2 minus 0.1 t square। तो v को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा। तो इस पहले डिस्टेंस को 0 to 5 हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके लिए इंटीग्रेट करेंगे, उसको S1 कह लें। इंटीग्रेट 0 to 5 इज द लिमिट,
को आपने स्पीड को इंटीग्रेट करना, 9/4 प्लस 9 × t+1 -2 पावर है -0.1 t²। इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 9/4 t+9 t+1 -1/-1 -0.1 t3/3. The limit is 0 to 5. 0 to 5 is the limit. अब हम इसको एडजस्ट करते हैं। पहले ये हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, S1 इज 9/4 t -9/t+1। -1 को एडजस्ट कर लिया हमने 9 के साथ, माइनस वाली टर्म आ जाएगी वो -0.1/3 t⁻³ तो 0 to 5 is the limit. अब upper limit minus lower limit. Upper limit first we will apply 5. So this becomes 9/4 into 5 minus, in case of t we will put 5, 9/t+1, that becomes 6, 5 plus 1 6, minus 0.1/3 t5. t3 means 5 power 3. This is the upper limit. ये upper limit है, minus lower limit is, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे हम, तो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 9/4 t ये 0 हो जाएगा, तो -9/0 + 1 9 ही रह जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास -9/1 -0। तो ये लोअर लिमिट थी। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास S1 जो है ये आ जाएगा 45/4 -9/6 -25/6 plus 9. This becomes 175/12. इसको डेसिमल में रख सकते हैं 14.58। ओके, नेक्स्ट फॉर S2 डिस्टेंस 2 जो है, अब हमने इंटीग्रेट तो हमने किया हुआ, बट वी विल टेक द लिमिट फ्रॉम 5 to 10। इंटीग्रेटेड फॉर्म इज 9/4 t प्लस -9/t+1 -0.1/3 t3 इज, हमने पहले ही इसको इंटीग्रेट कर लिया, वही फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट किया है वेलोसिटी को, तो हमारे पास डिस्टेंस है। बट अब हम लिमिट अप्लाई करनी है यहाँ से 5 to 10। 5 to 10 लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा S2 9/4 into 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -9/10 + 1 11 आ जाएगा, -100/3, putting the value of t10. This is upper limit minus lower limit is 5. अब हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 9/4 into 5 -9/6 -0.1/3 5 power 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस बिकम्स S2 will be
equal to 90 over 4 minus 9 over 11 minus 100 over 3 minus 45 over 4 minus 9 over 6 uh, minus 4.1667. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. This becomes S2 22.5 minus 0.818 minus 33.3 डेसिमल में लिख लिया हमने माइनस 11.25 minus 1.5 minus 4.1667 and so this becomes minus 11.618 minus 5.583 or this becomes minus 17.201. Distance minus में आ गया displacement, but we will take magnitude only. हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसकी. तो नेक्स्ट so distance traveled in 10 seconds. So distance in 10 seconds हमारे पास आ जाएगा S1 plus S2. S1 we have already found, that is 14.58. Now the distance is we will take its magnitude only, not negative sign, because it is the distance 17.201. So adding we get 31.8 meters, correct to three significant figures.